अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इन द प्रीवियस लेक्चर यस्टरडे हमने पढ़ा था चैप्टर 1 ऑफ इलेक्शन एक्ट और उसके हमने रिलेटेड एमसीक्यूज किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 और आफ्टर ईच सेक्शन हम उसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी देखेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चैप्टर 2 की जो मेन हेडिंग है दैट इज अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईसीपी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला या सेक्शन 3 है प्रोसीजर ऑफ द कमीशन। इसके अंदर सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 16 तक होंगे। तो सेक्शन 3 इज प्रोसीजर ऑफ द कमीशन के किस तरह जो है कमीशन अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स द कमीशन शैल रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। सेकंड सब क्लॉज, the Commission may exercise its powers and perform its functions even if the office of any member of the Commission is vacant or any of the members is for any reason unable to attend the proceedings of the Commission, and the decision of the majority of the members shall have the effect of the decision of the Commission. If upon any matter requiring a decision of the Commission there is a difference of opinion among its members, the opinion of the majority shall prevail and the decision of the commission shall be expressed in terms of the opinion of the majority, provided that where the number of members attending the proceedings of the commission are 4 and they are equally divided in their opinion. B, where the members attending the proceedings of the commission are 3 and there is a difference in opinion among them. In that case, the matter shall be placed in for the decision before the full commission comprising all its members. Subclause 4 is in this section and section 6, the term members of the commission includes the commissioner also. ठीक है, तो इस सेक्शन में और सेक्शन 6 में जब हम पढ़ेंगे तो मेंबर ऑफ द कमीशन के अंदर इंक्लूडेड है कमिश्नर भी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं बिफोर एक्सप्लेनिंग इट इन द सिंपल लैंग्वेज। तो सबसे पहले क्लॉज में बात की गई है सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द प्रोसीजर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट्स इट्स ओन प्रोसीजर while performing its function and exercising its powers। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के दौरान और अपने पावर्स को एक्सरसाइज करने के दौरान अपना खुद का जो है प्रोसीजर उसको रेगुलेट करेगा। This means no external body sets its operational procedure, it decides internally। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल बॉडी जो है या कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी जो है इसका ऑपरेशनल प्रोसीजर जो है वो डिसाइड नहीं करती, ये खुद अपना प्रोसीजर देखता है और उसको डिसाइड करता है, उसके बारे में डिसीजन देता है। सेकेंड सब क्लॉज, फंक्शनिंग डिस्पाइट वैकेंसीज और एब्सेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर है इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ वेकेशंस की वजह से हो सकता है या कुछ और रीजंस की वजह से कि एक जो था उसने अर्ली रिटायरमेंट ले ली और उसकी जगह भी किसी को अपॉइंट नहीं किया गया। सो इन दैट केस जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे वो अपना काम करते रहेंगे, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, और इफ क्या कहा गया, अ पर्सन सीट इज वैकेंट, अ मेंबर इज अनएबल टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स फॉर एनी रीजन। ठीक है, अब इस केस में जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वही कमीशन का डिसीजन कंसीडर किया जाएगा। थर्ड सब क्लॉज में बात की गई मेजोरिटी ओपिनियन रूल की। तो मेजोरिटी ओपिनियन रूल का मतलब यही है कि व्हेन द मेंबर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन द मेजोरिटी व्यू प्रीवेल, जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वही प्रीवेल करेगा।
The official decision of the commission is expressed according to the majority opinion. और जो ऑफिशियल डिसीजन होगा कमीशन का वो एक्सप्रेस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ओपिनियन. स्पेशल केस टाई सिचुएशन, जबकि 4 मेंबर्स हैं और एक एब्सेंट है. इन दैट केस जो हमने फोर सब क्लॉज में देखा, इफ द मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड स्प्लिट टू 2, ठीक है. इस केस में क्या होगा, और 3 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और उन सब का जो डिसीजन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तीनों का एक डिफरेंट ओपिनियन है. द मैटर मस्ट बी प्रेफर टू द फुल कमीशन. तो वो जो मैटर होगा जब फुल कमीशन प्रेजेंट होगा उसके सामने रखा जाएगा, जिसमें सारे उसके मेंबर्स होंगे और फिर उसका डिसीजन लिया जाएगा. डेफिनेशन ऑफ मेंबर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, फिर उसके बारे में हमने देखा कि इस क्लॉज में, इस सेक्शन में, सेक्शन 3 में और सेक्शन 6 में मेंबर में जो है वो कमिश्नर भी आ रहे हैं. तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन. अब इसके हम एमसीक्यूज करते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, हु रेगुलेट्स द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कमीशन. इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, कमीशन इटसेल्फ, कमीशन खुद करता है, फेडरल गवर्नमेंट करती है, तो कमीशन इटसेल्फ. द कमीशन कैन परफॉर्म functions, or sorry, the commission can function even if a seat is vacant or a member cannot attend. B option. In case of a difference of opinion among members, whose opinion prevails? So option C, majority opinion. If 4 members are present and split equally in opinion 2-2, what happens? Option C, matter goes to the full commission. If 3 members are present and they disagree, the matter is referred to the full commission. Option B. For the purpose of section 3 and section 6, member of the commission includes chief election commissioner. Option B. The decision of the commission is officially expressed in terms of opinion of the majority. Option C. When can the commission not perform its function? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कमीशन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नेवर. इट कैन ऑलवेज परफॉर्म फंक्शन. So this was about section 3. Let's move on to the section 4, which is about power to issue directions. Commission shall have the power to issue such directions or orders as may be necessary for the performance of its function and duties, including an order for doing complete justice in any matter pending before it, and an order for the purpose of securing the attendance of any person or the discovery or production of any document. ठीक है. सेकंड क्लॉज है, सब क्लॉज है इसका. Any such direction or order shall be enforceable throughout Pakistan and shall be executed as if it had been issued by High Court. Third subclause is anything required to be done for carrying out the purposes of this act for which no sufficient provisions exist shall be done by such authority and in such manner as the commission may direct. ठीक है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इन सिंपल लैंग्वेज. स्कोप ऑफ पावर के सबसे पहले सब सेक्शन में बताया गया कि कमीशन के पास जो पावर्स हैं उनका क्या स्कोप है. पावर टू इशू डायरेक्शंस. ठीक है. तो उसके एक्सप्लेनेशन में है द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन इशू एनी डायरेक्शंस और ऑर्डर्स नेसेसरी फॉर. तो कौन कौन सी डायरेक्शंस या ऑर्डर्स जो है वो इशू कर सकते हैं जो कि किस चीज के लिए जरूरी हो. परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज, इसके फंक्शन और ड्यूटीज की परफॉर्मेंस के लिए. डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट. ठीक है. अगर इसके सामने कोई मैटर लाया जाता है उसमें ये कंप्लीट जस्टिस भी कर सकते हैं.
Third is securing the attendance of any person. अगर किसी की attendance को secure करना है तो तब discovery और production of any document. अगर किसी document की production करनी है, किसी document को produce करना है for the purpose of evidence, तो ये उसका भी order pass कर सकते हैं. अब इन्फोर्सेबिलिटी क्या होगी इस ऑर्डर की? एक तो ये थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो इन्फोर्सेबल होगा, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर. उसके बाद ये इसको ऐसा माना जाएगा जैसे कि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा. ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है. उसके बाद उसको एक रेजिडुअल अथॉरिटी भी दी गई है कमीशन को कि अगर कोई ऐसी चीज, इफ द एक्ट हैज नो प्रोविजन और इनसफिशिएंट प्रोविजन फॉर अ मैटर, के अगर एक्ट के अंदर जो है वो एक इनसफिशिएंट प्रोविजन दी गई है किसी एक चीज के ऊपर, तो तब जो है कमीशन ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सी अथॉरिटी जो है वो एक्ट करेगी और कैसे एक्ट करेगी. मतलब कि ये कमीशन को थोड़ी अथॉरिटी दे दी गई है कि अगर इस एक्ट में कोई ऐसी चीज ऐड नहीं भी की गई तो तब भी वो इस चीज का डिसीजन ले सकता है कि कैसे उसको परफॉर्म किया जाएगा. इसके रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं. सेक्शन 4 empowers the election commission issue necessary directions or orders. Option B, one key purpose of section 4 is to, option A, do complete justice in matters before the commission. Under section 4, the commission shall secure, option A, attendance of any person, ये भी वो secure कर सकता है. The commission's power include ordering the production of, ये भी हमने देखा, any document required for proceedings. Fifth one is directions of the election commission under section 4 are enforceable throughout Pakistan. Enforceability या उसका extent बताया गया. Next we have such directions are executed as if issued by High Court. If the act has no provision for a matter, the commission may direct an authority to act in a specified manner. The residual power under section 4 allows the commission to fill legal gaps in carrying out the act's purposes. कि अगर कोई legal gaps हैं तो उसको भी commission fill कर सकता है. Complete justice in section 4 means resolving matters fully and fairly. And section 4's powers apply to matters, option B, covered or insufficiently covered in the act. तो वो वाले मैटर्स जो कि completely कवर किए गए हैं एक्ट में और वो वाले भी जो जिनको sufficiently कवर नहीं किया गया, उन मैटर्स के लिए भी सेक्शन 4 की जो पावर्स हैं वो अप्लाई होती हैं. नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 5, assistance to the commission. The clause A is the commission or the commissioner or the commission may require any person or authority to perform such functions or render such assistance for the purpose of this act as he or it may direct. It shall be the duty of all the executive authorities in the federation and the provinces to render which assistance to the commission and the commissioner and the commission in the discharge of his or its functions as may be required by the commissioner or the commission. The federal government and each provincial government shall make available to the commission such staff as it may require for the performance of its function under this act, provided that where the commission decides to utilize the services of serving judicial officers, it may do so in consultation with the Chief Justice of High Court concerned. After the election program has been issued, until the publication of the names of the returned candidates in the official gazette, the government or authority shall not post or transfer any official appointed or deputed in connection with an election without prior approval in writing of the commission, including posting or transfer the decision
in respect whereof he has been implemented, and the Commission may itself issue necessary directions or such government or authority for posting or transfer of any official. ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेसिकली इसमें असिस्टेंस के बारे में बात की गई है, और जो दूसरा इसमें मेन पॉइंट डिस्कस किया गया है वो ट्रांसफर के बारे में किया गया है। तो फर्स्ट सब क्लॉज में बात हुई अथॉरिटी टू रिक्वायर्ड असिस्टेंस के, अगर कमिश्नर और कमीशन के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी पर्सन की या किसी भी अथॉरिटी की असिस्टेंस को रिक्वायर कर सकता है टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस एंड रेंडर असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एक्ट। सेकेंड सब क्लॉज में बात की गई मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। अब उनकी ये ड्यूटी है कि वो मस्ट असिस्ट करें कमिश्नर को। All the executive authorities in the federation and province must assist the commissioner or the commission when required. थर्ड सब क्लॉज में बात की जा रही है प्रोविजन ऑफ द स्टाफ, कि जो कमीशन या कमिश्नर है सॉरी उसको स्टाफ भी प्रोवाइड किया जाए। The federal and each provincial government must provide staff to the commission as needed to perform its function. If the commission wishes to use serving judicial officers, तो तब वो किसके साथ कंसल्टेशन के बाद जो है वो सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स की सर्विसेज दे सकते हैं। वो कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न। एंड द लास्ट वन इज रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्टिंग और ट्रांसफर ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड। जब इलेक्शन हो रहे हैं तो तब जो है वो किसी भी इलेक्शन ऑफिशियल की पोस्टिंग या ट्रांसफर नहीं की जा सकती, लेकिन एक सूरत में की जा सकती है जबकि रिटर्न अप्रूवल दे दे कमीशन खुद, तब की जा सकती है। फॉर द असिस्टेंस ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम अंटिल द पब्लिकेशन ऑफ इशुएंस ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम हो गया, उसके बाद जब तक पब्लिकेशन नहीं होती रिटर्न कैंडिडेट्स के नेम्स की इन गजट तब तक, ठीक है, कब से कब तक उनकी ट्रांसफर नहीं हो सकती ये भी याद रखना है आपने। नो गवर्नमेंट और authority can post or transfer any official appointed or deputed for election duties without prior written approval of the commission. Even pending or posting transfer orders cannot be implemented without such approval. The commission itself can issue directions for posting or transfer. तो कमीशन अगर खुद चाहे तो वो डायरेक्शन दे सकता है पोस्टिंग या ट्रांसफर के लिए, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं दे सकती। एमसीक्यूज देखते हैं इस सेक्शन के। सेक्शन 5 empowers the commission to require assistance from any person and or authority. Which authority must assist commission when required? Option B, all executive authorities in federation and provinces. Question number 3 is provision of staff to the commission is responsibility of option B, federal and provincial governments. Question number 4, before utilizing services of serving judicial officers, the commission must consult option C, chief justice of the concerned high court. ठीक है, जब उसको जुडिशियल ऑफिसर्स की सर्विसेज चाहिए तो ही विल कंसर्न विद द कमीशन विल कंसर्न विद द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्टिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स अप्लाइज फ्रॉम, कब से अप्लाई होगा? इशुएंस ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब तक अप्लाई होगा? अंटिल, जब तक के जो रिटर्न कैंडिडेट्स हैं उनका नाम गजट में नहीं आ जाता, पब्लिकेशन ऑफ रिटर्न कैंडिडेट्स नेम इन द गजट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, पोस्टिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्शन ड्यूटी ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्टेड पीरियड रिक्वायर्स, तो इसमें क्या रिक्वायर्ड होगा? प्रायर रिटर्न अप्रूवल ऑफ द कमीशन, कि जो रिटर्न अप्रूवल है वो पहले लिया जाए कमीशन का। Next question, question number 8 is the commission can issue posting or transfer directions to any government or authority, किसी भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी को वो इशू कर सकती है पोस्टिंग या ट्रांसफर डायरेक्शंस, कमीशन जो है वो खुद। क्वेश्चन नंबर 9,
If the commission decides to use judicial offers, it is mandatory to option B, consult the Chief Justice of High Court concerned. Question number 10, pending posting or transfer orders of election officials during the election period. Option B, cannot be implemented without commission approval. ठीक है, जब तक कमीशन का खुद अप्रूवल नहीं होगा तब तक जो पेंडिंग पोस्टिंग या ट्रांसफर्स हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड वो नहीं किए जाएंगे. Section 6, delegation of powers. The Commission may authorize the Commissioner or any of its members or any of the officers of the Commission to exercise and perform any of its powers and functions under this Act. Okay? Subclause 2. The Commissioner shall exercise powers relating to the appointment of officers and staff to be employed in connection with the functions of the Commission and determine their term and conditions of employment in accordance with the rules. The Commission shall continue to constitute benches comprising 2 or more members of the Commission to hear and decide complaints, applications, petitions, or appeals filed before it under this Act. The decision of the bench constituted under subsection 3 shall be deemed to be the decision of the Commission, except where due to difference of opinion among the members of the bench, the matter required to be placed before the full Commission for decision under section 3. इसकी explanation देखते हैं आगे. तो subsection 1 में बात की गई authorization to delegate powers. So basically it is about delegation of powers. तो पहले सबसेक्शन में ऑथराइज किया गया कमीशन को दैट इट कैन डेलीगेट इट्स पावर्स. किसको डेलीगेट कर सकता है कमीशन? कमिश्नर को, अपने किसी भी मेंबर्स को या अपने किसी भी ऑफिसर को. टू एक्सरसाइज और परफॉर्म एनी फंक्शन पावर और फंक्शंस ऑफ द कमीशन. और जिसको डेलीगेट किए जाएंगे पावर्स वो आप कोई भी फंक्शन या ड्यूटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं कमीशन की. सेकेंड सब क्लॉज में बात की गई पावर ऑफ द कमिश्नर रिगार्डिंग स्टाफ. अब कमिश्नर क्या कर सकते हैं? अपॉइंटमेंट कर सकते हैं स्टाफ की खुद. अपॉइंट ऑफिसर्स एंड स्टाफ फॉर द फंक्शन ऑफ द कमीशन. डिटरमिन, उसके अलावा उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स डिटरमिन करेगा कमिश्नर. उसके बाद थर्ड पॉइंट में थर्ड सब क्लॉज में बात की गई द कमिश्नर विल कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस जिनके अंदर एटलीस्ट 2 मेंबर्स होंगे तो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 होने चाहिए. 1 मेंबर का बेंच नहीं बनेगा, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है. और जो बेंचेस हैं वो क्या करेंगे? दे विल हियर एंड डिसाइड कंप्लेंट्स, एप्लीकेशंस, पिटीशंस एंड अपील्स फाइल्ड अंडर द एक्ट. फोर्थ सब क्लॉज में बात की गई डिसीजन ऑफ द बेंचेस. The decision of such a bench is considered a decision of the commission. अब जो एक कमीशन बनाएगा, एक बेंच बनाया जाएगा कमीशन की तरफ से, उसका जो डिसीजन होगा उसमें जो 2 लोग हैं उनका जो भी डिसीजन होगा उसको कमीशन का ही डिसीजन कंसीडर किया जाएगा. एक्सेप्ट, और कब नहीं किया जाएगा? जब जो 2 मेंबर्स थे एक बेंच के, उन दोनों का जो डिसीजन था वो एक दूसरे से डिफरेंट था, मतलब उनका एक डिसीजन एक पॉइंट पर वो नहीं आ सके. तो इस केस में क्या होगा कि जो मैटर है वो पूरे कमीशन के सामने रखा जाएगा, जिस तरह हमने सेक्शन 3 में बात की थी. सेक्शन 6 से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से आ सकते हैं एग्जाम में? अंडर सेक्शन 6 द कमीशन में ऑथराइज पावर्स टू. इसको अपनी पावर्स ऑथराइज कर सकता है कमिश्नर को, मेंबर्स को या ऑफिसर्स को जो कि कमीशन के अपने ऑफिसर्स हैं. Question number 2, who can appoint officers and staff to the commission? Option C, the commissioner. Commissioner जो है वो appoint करेगा staff को. Question number 3, terms and conditions of the commission staff are decided by. तो ये जो terms and conditions होंगी ये भी commissioner decide करेगा under rules.
benches constituted by the commission must have at least 2 members होने चाहिए कम से कम. Which matter can benches hear and decide? Complaints, applications, petitions, or appeals. The decision of the bench is considered a decision of the commission unless there is a difference of opinion among bench members. If there is a difference of opinion among bench members, the case is sent to the full commission under section 3. Which section governs the procedure when the benches disagree? सेक्शन 3 जो है ये गवर्न करता है प्रोसीजर को जब बेंचेस डिसएग्री करते हैं. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. The commissioner's authority to appoint staff is subject to ऑप्शन बी रूल्स ऑफ द कमीशन. तो बेसिकली जो रूल्स होंगे कमीशन के उनके अकॉर्डिंगली ही उनको अपॉइंट किया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस उनके रखे जाएंगे. बेंचेस कैन बी मेड अप ऑफ 2 or more members of the commission. तो एटलीस्ट 2 होंगे और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. सेक्शन 7 पावर टू requisition property. A provincial government, deputy commissioner, political agent, or head of the district administration, by whatever name called, shall, upon a request made in this behalf by the commission, the requisition a vehicle, vessel, or other means of transportation as is needed or is likely to be needed for the purpose of transporting to and from any polling station, ballot boxes or other election material, or any officers or other person engaged for the performance of any duty in connection with any action. तो इसमें बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है कि किस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे बैलेट बॉक्सेस को और टू ईच, और इसके लिए जो रिक्विजिट की जाएंगी व्हीकल्स या वेसल्स या अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उनका प्रोसीजर बताया गया. सेकंड सब क्लॉज, a provincial government deputy commissioner, political agent, or head of the district administration by whatever name called shall not requisition a vehicle, vessel, or other means of transportation which is being used by candidate or his election agent for any purpose connected with the election of such candidate. Any person authorized in this behalf by the provincial government may take possession of the vehicle, vessel, or other means of the transportation requisitioned under subsection 1 and may for that purpose use such force including police force as may be reasonably necessary. Where any vehicle, vessel, or other means of transportation is requisitioned under the subsection 1, there shall be paid to the owner thereof compensation, the amount of which shall be determined by the provincial government or officer requisitioning the vehicle, vessel, or other means of transportation on the basis of fares and rates prevailing in the locality for its hire. Fifth subclause is where the owner of the vehicle, vessel, or other means of transportation being aggrieved by the amount of the compensation so determined make an application to the provincial government within a period of 30 days from the date the amount has been determined, from the matter being referred to an arbitrator agreed upon by the parties. The amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the provincial government may determine. ठीक है, तो इसमें बेसिकली बात की गई कि जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिया जाएगा तो उसको किस तरह से जो है उसका फेयर डिसाइड किया जाएगा, और अगर उससे जो उसका ऑनर है वो फेयर से डिसएग्री करता है तो किस तरह से उसको प्रोसीड कर सकता है. इसकी एक्सप्लेनेशन में जो है बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी. पावर टू रिक्विजिशन प्रॉपर्टी, सबसे पहले सब क्लॉज में बात की गई अथॉरिटी टू रिक्विजिशन. ठीक है,
उसके अंदर किस किसके पास अथॉरिटी है कि वो रिक्विजिट कर सकता है वेसल को, व्हीकल को, ठीक है। अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन द फॉलोइंग कैन रिक्विजिशन व्हीकल, वेसल और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो कौन कौन है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिप्टी कमिश्नर, पॉलिटिकल एजेंट, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड। पर्पस क्या होगा इसको जो है प्रॉपर्टी को रिक्विजिट करने का? ट्रांसपोर्ट बैलेट बॉक्सेस, इलेक्शन मटेरियल एंड ऑफिसर्स और पर्सन्स परफॉर्मिंग इलेक्शन ड्यूटीज टू एंड फ्रॉम पोलिंग स्टेशन। ठीक है, तो बैलेट बॉक्सेस को, इलेक्शन मटेरियल्स को या जो ऑफिशियल्स हैं उनको पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए और वहां से वापस लाने के लिए इन व्हीकल्स को रिक्विजिट किया जाएगा। अब इनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाई गई हैं? कैन नॉट रिक्विजिट व्हीकल और वेसल बीइंग यूज्ड बाय द कैंडिडेट और हिज इलेक्शन एजेंट। कैंडिडेट जो कि इलेक्शन में खड़ा हुआ है और या उसका जो कोई इलेक्शन एजेंट जो है, और उसकी जो है व्हीकल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और उसकी कौन सी व्हीकल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? उस व्हीकल को जो कि वो इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, उसने अपने पोस्टर्स लगाए हुए हैं ऊपर, तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पावर्स टू टेक पोजेशन, ठीक है, पावर टू टेक पोजेशन एंड ऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी एक पर्सन को ऑथराइज कर सकती है कि वो पोजेशन लेगी जो भी व्हीकल्स को रिक्विजिट किया गया था उनका, और उस पर्पस के लिए जो है वो ऑथराइज पर्सन वो अगर जरूरत पड़ती है तो पुलिस फोर्स भी यूज कर सकता है अगर उसकी जरूरत हो। कंपेंसेशन, अब जिनसे व्हीकल्स ली गई हैं उनको कंपेंसेशन भी देगी गवर्नमेंट, ठीक है। द ऑनर विल बी पेड कंपेंसेशन बेस्ड ऑन प्रीवेलिंग लोकल हायर रेट्स, जो कि लोकल हायर रेट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग। The compensation is determined by the provincial government or the officer requisitioning the vehicle। या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि कितनी कंपेंसेशन दी जाएगी, या जो ऑफिसर है जो कि रिक्विजिट कर रहे हैं उनको वो डिसाइड करेगा। अब जो जिसकी व्हीकल ली गई, अब उसके पास एक राइट दिया गया उसको कि वो अपील कर सकता है अगर वो डिसएग्री करता है अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन से। उसको एक टाइम पीरियड दिया गया है। they may apply to the provincial government within 30 days। within 30 days वो अपील कर सकता है। अब उस केस में क्या होगा कि एक बंदे को एज एन आर्बिट्रेटर या मिडल मैन बना दिया जाएगा जो कि डिसीजन लेगा, और बेसिकली दोनों पार्टी एग्री होंगी कि ठीक है ये मिडल मैन बन जाना चाहिए। बोथ द ऑनर और जो कि उसको आर्बिट्रेट कर है, रिक्विजिट कर है ऑफिशियल, बेसिकली जिसने डिसाइड किया था कि कितनी कंपेंसेशन दी जाएगी, और उस पर्सन को अपॉइंट करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। द आर्बिट्रेटर्स डिसीजन विल डिटरमिन द फाइनल अमाउंट। तो जो भी उसका डिसीजन होगा वो फाइनल अमाउंट को डिटरमिन करेगा। सेक्शन 7 से कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं? हु कैन रिक्वेस्ट रिक्विजिशन ऑफ व्हीकल फ्रॉम इलेक्शन फॉर इलेक्शन पर्पसेस। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्ट करेगा रिक्विजिशन ऑफ व्हीकल्स को। ऑप्शन बी, विच अथॉरिटीज कैन रिक्विजिशन व्हीकल्स अपॉन ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्ट। ठीक है, किन अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करेगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, डिप्टी कमिश्नर को, पॉलिटिकल एजेंट को, या हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। पर्पस क्या होगा रिक्विजिशन का? उसमें पर्पस में आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बैलेट बॉक्सेस, इलेक्शन मटेरियल एंड इलेक्शन स्टाफ। व्हीकल्स बीइंग यूज्ड बाय द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन पर्पसेस, उनको जो है वो नहीं यूज किया जाएगा, कैन नॉट बी रिक्विजिशन। Who can take possession of the requisition vehicles? Any voter नहीं ले सकता, ठीक है। A person authorized by the provincial government, the option is correct। What type of force can be used to take possession of the requisition vehicle? So he can use the police force also, any force including police force if reasonably necessary। Compensation for requisition vehicle is based on प्रिवेलिंग लोकल हायर्स, इसके ऊपर बेस करेगा जो भी लोकल हायर्स होंगे उनके ऊपर। इफ द ऑनर डिसएग्रीज विद द कंपनसेशन दे कैन अप्लाई टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद इन 30 days फॉर आर्बिट्रेशन। ऑप्शन बी, हु अपॉइंट्स द आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ डिस्प्यूट ओवर कंपनसेशन। अपॉइंट इसको करेगा
provincial government करेगी appoint. Arbitrator is agreed upon by both parties and appointed by provincial government. Both parties जो है वो agree करेंगी कि ठीक है he should be the arbitrator और उसको appoint करेगी provincial government. Option B. So next we have Section 8 about power of the Commission to ensure fair elections. उसमें save as otherwise provided the Commission may. Commission के पास कौन-कौन सी powers हैं? Stop the poll at one or more polling stations at any stage of the election if it is convinced that it shall not be able to ensure the conduct of election justifiably, fairly and in accordance with law. Due to the large-scale malpractices, including coercion, intimidation, and pressures prevailing at the election. Review an order passed by officer under this act or rules, including rejection of the ballot papers and issue such instructions, exercises such powers, and make such consequential orders as may in its opinion be necessary for ensuring an election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with the provision of this act and the rules. इसकी explanation देखते हैं. So the section gives the Election Commission of Pakistan specific powers to maintain fair, honest, and lawful elections. कौन-कौन सी powers दी गई कि वो the commission can stop polling at one or more polling station. एक या एक से ज्यादा polling station के ऊपर जो है वो रुकवा सकता है polling किसी भी stage पर election के. अगर उसको इस चीज का यकीन हो गया कि वहां पर जो इलेक्शंस हैं वो फेयरली, जस्टली और इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो नहीं करवाए जा सकते और वहां पर लार्ज स्केल माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं. ठीक है, लार्ज स्केल में कौन कौन सी आ जाएगी? कोअर्शन आ जाएगी, इंटिमिडेशन और प्रेशर्स ऑन वोटर्स. सेकंड जो है बात की गई सेकंड पॉइंट में रिव्यूइंग ऑर्डर्स. The Election Commission of Pakistan can review orders made by any election officer under the act or rules. This includes reviewing a decision such as rejection of the ballot paper. ठीक है, अगर किसी इलेक्शन ऑफिसर ने एक बैलेट पेपर को रिजेक्ट कर दिया तो जो इलेक्शन ऑफिसर है उसके डिसीजन को रिव्यू भी किया जा सकता है और उस बैलेट पेपर को दोबारा से भी एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर वो वैलिड हो तो. इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स. इसके अलावा जो है वो इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स भी दे सकते हैं किस चीज के. द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन इशू इंस्ट्रक्शंस और मेक ऑर्डर्स दैट इट कंसीडर्स नेसेसरी टू इंश्योर इलेक्शंस आर जस्ट, ऑनेस्ट, फेयर एंड इन अकॉर्डेंस विद एक्ट एंड रूल्स. ठीक है, MCQs देखते हैं इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है. अंडर सेक्शन 8 the ECP may stop poll at one or more polling station at any stage of the election. Option B. The ECP can stop polling if large scale malpractices such as coercion or intimidation occur. Option B. Question number 3. Large scale malpractices mentioned in section 8 include कौन-कौन सी हैं? Option B. Coercion, intimidation, and pressures. Section 8 allows Election Commission of Pakistan to review orders passed by an election officers under the Act or rules. The example of any order the ECB can review is option B. Rejection of the ballot paper. उसको review कर सकते हैं. Apart from stopping polls and reviewing orders, Section 8 allows ECB to
Option B, issue instructions, exercise powers, and make orders to ensure fair elections. Question number 7. The powers under Section 8 are exercised to ensure elections are option B, honest, just, fair, and in accordance with the Act and rules. Question number 9. The malpractices occur at only 2 polling stations in a constituency. The ECP can stop the polls at those 2 polling stations. Okay? The power to review the rejection of the ballot paper lies with Election Commission of Pakistan. The overall aim of Section 8 powers is to, क्या एम है उसका? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है सेक्शन 8 के जो पावर्स दी गई उसका क्या एम है, इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है. इंश्योर द इलेक्शंस आर हेल्ड ऑनेस्टली, फेयरली एंड लॉफुली. तो इस सेक्शन का जो टाइटल है, बेसिकली हर सेक्शन का टाइटल आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन किसके रिलेटेड है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकें. तो सेक्शन 8 का आपको पता होना चाहिए कि पावर ऑफ द कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शंस. इसी तरह सेक्शन 9 है हमारे पास, जिसमें पावर ऑफ द इलेक्शन टू डिक्लेयर अ पोल वॉइड. ठीक है, वॉइड मींस के एक पोल को कलअदम करार दे देना. तो कब जो है कमीशन एक पोल को कलअदम करार दे सकता है, उसकी कुछ कंडीशंस होंगी. नाजिया, यहाँ से आप पढ़ें, अपना माइक ऑन करें. Power of the Commission to declare a poll void. First one, notwithstanding anything contained in this Act from facts apparent on the face of the record and after such inquiry as it may deem necessary, the Commission is satisfied that by reason of grave illegalities or such violations of the provisions of this Act or the rules as have materially affected the result of the poll at one or more polling stations or in the whole constituency, including implementation of an agreement restraining women from casting their votes, it shall make a declaration accordingly and call upon the voters in the concerned polling station or stations in the whole constituency as the case may be to reach. Please, and call upon the voters in the concerned polling station or stations or in the whole constituency as the case may be to recast their votes in the manner provided for by elections. Explanation: if the turnout of women voters is less than 10% of the total votes polled in the constituency, the Commission may presume that the women voters have been restrained through an agreement from casting their votes and may declare polling at one or more polling stations or election in the whole constituency void. Second one, notwithstanding the powers conferred on it by subsection first, the Commission may order filing of complaint under this Act before a court of competent jurisdiction against persons who entered into the agreement referred to in subsection first. Third one, notwithstanding the publication of the name of a returned candidate under Section 98, the Commission may exercise the powers conferred on it by subsection first before the expiration of 60 days after such publication, and where the Commission does not finally dispose of a case within the said period,
The election of the returned candidate shall be deemed to have become final, subject to the decision of an election tribunal on an election petition, if any, force one while exercising the powers conferred on it by subsection first. The commission shall be deemed to be an election tribunal to which an election petition has been presented and shall, notwithstanding anything contained in chapter 14, regulate its own procedure. Fifth one, any person aggrieved by a declaration of the commission under this section may within 30 days of the declaration prefer an appeal to the Supreme Court. जी, सो बेसिकली इट इज चैप्टर 9 सब क्लॉज 4 में जो बात हो रही है ये चैप्टर 9 बताया गया है यहाँ पर। तो इस सेक्शन में जो पावर्स दी गई हैं कमीशन को वो बेसिकली टू डिक्लेयर अ पोल वॉइड, एक पोल को जहां पर पोलिंग कंप्लीट हो गई है या अभी हो रही है उसको वॉइड करार दे देना, उसको कलअदम करार देना, तो वो कब जो है वो कमीशन कर सकता है। The section gives the Election Commission of Pakistan authority to cancel and rehold the polling in certain situations where integrity of the election is compromised. तो किस तरह से compromise होगी? Sub clause 1, ground for declaring a poll void. The Election Commission of Pakistan can declare a poll void at one or more polling stations और in the entire constituency, एक या एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन में भी और एक पूरे हल्के में भी अगर वो चाहे तो उसको कलअदम करार दे सकता है if it finds grave illegalities or violations of the act or rules. जहां पर कहीं भी ग्रेव इलीगैलिटीज हुई है, मतलब कि इलीगैलिटीज बहुत ज्यादा हुई हैं और वायोलेशन हुई है एक्ट्स की, रूल्स की, इसके अलावा दैट मटीरियली अफेक्टेड द इलेक्शन रिजल्ट, जिनसे इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो इफेक्ट होगा। The large scale violations of the law, implementation of an agreement preventing women from voting. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि अगर उसको ये फील होता है कि कहीं पर औरतों को जो है वो एग्रीमेंट किया गया उनके साथ कि वो वोट नहीं करेंगी और उनको रोका गया, तो तब भी कलअदम करार दे दिया जाएगा। स्पेशल वुमेन्स टर्न आउट रूल्स, तो इसका एक रूल बना दिया गया है, ये याद रखिएगा कि कितने परसेंट जो है वो टर्न आउट रूल है। If the women voter turnout is less than 10% of the total votes polled in a constituency, मतलब एक हल्के में जितने भी टोटल वोट्स कास्ट किए गए हैं उनमें जो वुमेन का जो टर्न आउट था या जो परसेंटेज थी वोट करने की वो 10% से भी कम थी, बाकी सारे जो थे वो मेन थे जिन्होंने वोट कास्ट किया, तो उस केस में जो है वॉइड कर देगा इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन में प्रिज्यूम that the women were restrained, उनको रोका गया by the agreement and can declare the poll void. Legal action against offenders, अब जो लोग ऑफेंड करेंगे रूल्स को तोड़ेंगे उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। The ECB can also order that the complaint be filed in court against the individuals, वो ये भी ऑर्डर करेगा ECB के जो कंप्लेन है वो फाइल की जाए उन लोगों के खिलाफ who made such an agreement to prevent women from voting, जिन्होंने औरतों को वोट करने से रोका है। Time limit for action, even after announcing the winning candidate under section 98, अगर वो सेक्शन 98 के अकॉर्डिंग किसी को एज अ विनिंग कैंडिडेट अनाउंस भी कर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद भी उसके पास टाइम लिमिट होती है कि वो पोल को वॉइड कर सकता है। और कितनी टाइम लिमिट होगी? वो 60 डेज की होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन स्टिल डिक्लेयर अ पोल वॉइड विद इन 60 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। अगर वो 60 डेज में नहीं करता तो तब क्या होगा? इफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डज नॉट रिजॉल्व द केस, उसके पास एक केस आया हुआ लेकिन उसने 60 डेज में नहीं किया
the election result become final. तो जो election result होगा वो final हो जाएगा unless challenged in the election tribunal. जब तक कि उसको इलेक्शन ट्राइब्यूनल में कोई चैलेंज ना करते तब तक वो फाइनल ही कंसीडर किया जाएगा. और फिर 4 में बात की गई while exercising these powers the ECP is considered an election tribunal. और दैट केस इसी इन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए ईसीपी को ही इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो कंसीडर किया जाएगा. द ईसीपी कैन रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर इन सच मैटर्स. इन मैटर्स में भी ईसीपी जो है वो अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट करेगा. एंड द लास्ट वन इज राइट ऑफ अपील. एनीवन aggrieved by ECP's declaration can file an appeal in Supreme Court within 30 days of the decision. अब ECB ने जो भी डिसीजन लिया है रिगार्डिंग द वॉइड ऑफ द इलेक्शन, फॉर एग्जांपल के कोई ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया था मेंबर लेकिन विद इन 60 डेज ECB ने उसको कलअदम करार दे दिया वोटिंग को. अब वो जो पर्सन है अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसके डिसीजन को तो उसके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो विद इन 30 डेज जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर अपील कर सकता है इस डिसीजन के अगेंस्ट. तो ये 60 डेज जो पीछे बात की गई कि उसके पास 60 डेज हैं वो भी याद रखने हैं. और जिस पर्सन के खिलाफ डिसीजन आएगा और अगर वो अपील करना चाहे किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में करेगा और विद इन 30 डेज में करेगा. ये लिमिट्स हैं वो याद रखनी है आपने. Section 9 ensures that if serious illegalities or suppression of women voters occur, the ECB can cancel the poll, order revoting, punish the offenders, and act even after results are announced, but only within 60-day limit. MCQs देखते हैं इससे related. Power of the Commission to declare a poll void. Question number 1. Under Section 9, the Election Commission may declare poll void if option B. Grave illegalities or violations have materially affected results. Question number 2. The ECB can declare a poll void at option C. One or more polling stations on the whole constituency or the whole constituency. एक या एक से ज्यादा polling station में या एक पूरे हल्के में जो है वो पोल को कलअदम करार दे सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. The poll can be declared void if women voters are restrained through an agreement. The women voter turnout threshold for presuming an agreement to restrain voting is 10%. ये बहुत important है. If women voter turnout is below 10%, the ECB may presume restraint and declare poll void. The ECB can call for revoting in as per by election procedure. तो जब revoting होगी तो वो by election के procedure से होगी. How can ECB direct to file a complaint under Section 9(2)? Option B, Court of Competent Jurisdiction. Section 9. Section 9 allows the ECB to act even after results are published under. तो रिजल्ट जो है वो किस सेक्शन के अंडर पब्लिश होंगे? सेक्शन 98 के. ये भी हमने ऊपर देखा. जब हम सेक्शन 98 की तरफ जाएंगे उसको हम डिटेल में देखेंगे. The time limit for Election Commission of Pakistan to declare poll void after result publication is. तो क्या टाइम लिमिट दी गई है? 60 days की. ऑप्शन सी. If ECB fails to decide within 60 days, the results become final. तो जो रिजल्ट्स हैं वो फाइनल हो जाएंगे और एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ ECB वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और उसके पास जो है वो ड्यूरेशन होगी विद इन 30 days आफ्टर द डिसीजन. After 60 days, the election result may still be challenged in Supreme Court. While declaring a poll void, the ECB is deemed to an election tribunal. In exercising tribunal powers under Section 9, the ECB can regulate its own procedure. Option B, appeal against Election Commission of Pakistan's declaration under Section 9 can be made to Supreme Court. The time limit for filing an appeal against ECB's declaration is
30 days. Which factor is specifically mentioned as affecting poll fairness under Section 9? Restraining women voters. The declaration of poll void can be based on facts apparent on the face of the record. Before declaring the poll void, ECB may conduct such inquiry as it deemed necessary. Section 9 overrides चैप्टर 9 प्रोविजंस। तो जहां पर चैप्टर 9 की बेसिकली बात है तो ये बताया गया था कि सेक्शन 9 जो है वो ओवरराइड करता है, उसकी अथॉरिटी ज्यादा है कि चैप्टर 9 से, मतलब उसकी में जो प्रोविजंस दी गई है उसके ऊपर ओवरराइड करता है सेक्शन 9। और लास्ट वन इज द ईसीपी's declaration under section 9 can be challenged by, कौन चैलेंज कर सकता है? एन एग्रीव्ड पर्सन, जो कि डिसएग्री कर रहे हैं। आगे है हमारे पास सेक्शन 10, पावर टू पनिश contempt. The commission may exercise the same powers as high court to punish any person for contempt of court and the contempt of court ordinance 2003 or any other law pertaining to attempt or contempt shall have effect accordingly as if reference therein to a court and to a judge where a reference respectively to the commission and the commissioner or the case may be the member of the commission. Explanation देखते हैं इसकी। The section 10 gives the election commission of Pakistan the same powers as a high court, ठीक है, उसको सेम पावर्स दे दी गई हैं जैसे कि एक हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं, लेकिन टू पनिश द कंटेम्प्ट को पनिश करने के लिए। अब कंटेम्प्ट में क्या चीजें आ जाती हैं? This means that if someone disrespects, disobeys or interferes with the commission's proceedings, ठीक है, कमीशन की प्रोसीडिंग्स के साथ डिसरिस्पेक्ट करे, डिसओबे करे रूल्स एंड लॉज को, इंटरफेयर करे प्रोसीडिंग्स के साथ, decisions or authority, the ECB can take legal actions similarly as how High Court would handle contempt cases. The Contempt of Court Ordinance 2003, Part 5 of 2003, तो ये याद रखना आपने, Contempt of Court Ordinance जो है वो 2003 में पास किया गया था, और any other law related to contempt applies here with a substitution. तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर दिया गया किसको किससे? Where the law says court, जहां पर contempt of court में ऑर्डिनेंस 2003 में जो है कोर्ट का नाम आया, वहां पर जो है वो कमीशन से उसको रीड किया जाएगा, इट शुड बी रेड एज कमीशन। Where it says judge, जहां पे वो जज कहा गया उसको कहा उसकी जगह नाम आएगा कमिश्नर का, इट शुड बी रेड एज कमिश्नर और द मेंबर ऑफ द कमीशन। This ensures that the commission can maintain authority, discipline, and respect during the election-related proceedings, just like a judicial court. MCQs देखते हैं इससे related. Under Section 10, the Election Commission has the powers as High Court. Option B. The main purpose of the Section 10 is to allow Commission to. Option B. Punish for contempt. The Contempt of Court Ordinance referred to in Section 10 was enacted in 2003. In the application of Contempt of Court Ordinance to the Election Commission of Pakistan, the word court is replaced with commission. ठीक है? In the context of Section 10, the word judge is replaced with, judge को जो है वो replace किया गया है commissioner से और member of the commission से. Section 10 empowers the commission to punish for contempt in the same manner as High Court. Contempt of the commission could include, तो उसमें क्या आ जाएगा? Disobeying ECB Election Commission of Pakistan को disobey करना, ये भी आता है. Using derogatory language towards Election Commission of Pakistan, ये भी आ जाएगा. Disrespecting proceedings को disrespect किया जाए, तो all of above.
Question number 8. The powers under Section 10 can be exercised by the Commission as a whole or its members. Which law implies to contempt proceedings under Section 10? Option B. Contempt of Court Ordinance 2003. The Contempt of Court Ordinance applies to Commission as if it were a High Court. High Court की तरह उसको लिया गया. So option B. आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था. आज हमने डिस्कस किए हैं sections 3 to 10 और which was the first part of chapter 2. कल लेक्चर होगा सेकंड पार्ट के ऊपर चैप्टर 2 के, जिसमें हम 11 to 16 करेंगे सेक्शंस. ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें. अस्सलाम वालेकुम सर, ये पूछना चाह रही थी मैं कि सेक्शन 2 में तो हमने डेफिनेशंस में की थी, तो ये अगेन सेक्शन 2 है. ये चैप्टर इसकी 2 है. ये चैप्टर चैप्टर 2 2 है. उसके आगे हमने फर्दर सेक्शंस 3 to 10 किए हैं. जी. और वो जो हमने किया था वो चैप्टर 2 नहीं था, डेफिनेशंस जो थी वो चैप्टर 1 था. चैप्टर चैप्टर 1 1. में हमारे पास दो सेक्शन थे, 1 और 2. जी. 1 था शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट का. 2 डेफिनेशंस का था. दो सेक्शन थे हमारे चैप्टर 1 में. उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. उसके अंदर सेक्शन 3 से लेकर 16 तक है टोटल, जिसमें से आज हमने 3 से 10 किए हैं और बाकी 6 जो है वो कल के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे. ओके सर, बहुत शुक्रिया. वेलकम. एक्सप्लेनेशन क्लियर थी आप लोगों को? एमसीक्यूज भी हेल्पफुल थे आप लोगों के लिए? जी सर, बहुत अच्छा. ठीक है. और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये नहीं है तो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसको आप लोग रिवाइज भी कीजिएगा अच्छे से और कोशिश करेंगे जो हेडिंग्स हैं आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 3 किस बारे में है, सेक्शन 4 किस बारे में है. अंदर का जो डाटा है उसके आप पॉइंट्स बना लें, अपने पास नोट्स बना लें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, या ये जो एमसीक्यूज हैं ये देख लें. इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा और जो लेक्चर 1 हुआ था उसकी भी रिकॉर्डिंग कर दूंगा. ठीक है, बेसिकली जितने भी अब डीबीएम के लेक्चर हो रहे हैं इन सबकी मैं कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी हो वहां से देखना चीज़ों. ओके, ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज.